प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार। आज हम भारतवासी अपना 42वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन यहां राजपथ पर परेड की सलामी लेंगे, जिसका आंखों देखा हाल आप तक मैं जसदेव सिंह और मेरे साथी कमेंटेटर्स कमांडर श्याम वर्मा, ब्रिगेडियर चित्रंजन सावंत और कोमल जीवी सिंह आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री श्री चंद्र शेखर इंडिया गेट स्थित अमर जवान स्मारक पर देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके लिए वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी कमेंटेटर राजीव मेहरोत्रा। This is Rajiv Mehrotra at the monument to the unknown soldier. I'm at the base of India Gate, a prop of a monument on two chiseled legs at the eastern end of Rajpath. Behind me, the flames of remembrance for those who have laid down their lives that we may live in peace and freedom. The Amar Jawan Jyoti was lit by Mrs. Indira Gandhi in 1973. Each year, before the colour, the pageantry and the celebrations, the nation pauses in homage. There's an air of expectancy, of eager excitement, as we await the arrival of the Prime Minister, Mr. Chandra Shekhar. Despite the enormous reach of Doordarshan and the vivid detail it captures, if we dare allow ourselves a compliment, from the early hours of the morning, people have been trying to get here somewhere near the 60-foot highway with tricolours that flank it. And it will take a genius with a computerized self or a brain to give you an accurate estimation of the number of people who have assembled here. Of course, it begins like this every year. A thin trickle around sunrise, then a stream, a river, a flood, and then a torrent by the time the Prime Minister drives down Rajpath for the Amar Jawan Jyoti ceremony and yields to the President to preside over the parade and the cultural pageant. The parade has remained an evergreen attraction. Even the dress rehearsal 2-3 days ago drew capacity crowds. About now, the excitement settles down and it feels like the eye of the hurricane. Really very calm, disciplined and peaceful. And as the sun overcomes the early morning mist, there is a quiet calm and eager expectancy. Here, Rajpath is the focal point of the parade, and perhaps more than 10,000 personnel of the armed forces, paramilitary units, police, NCC, school children, folk dancers, and other voluntary organizations will march by the President, who will be here not only in his capacity as the head of the Republic, but as the supreme commander of the armed forces. He not only takes a salute from the men under his command, but in a sense salutes them himself. The Prime Minister drives down Rajpath, waving to the crowds on either side towards India Gate for the ceremony in homage to the Amar Jawan. As the threats and challenges to our Republic, the violence within and without grow, before we parade the weapons that defend us, it is indeed befitting that we pause and remember the fragility of human life, the tragedy that its loss leaves behind.
As we pay homage to the Amar Jawan Jyoti, we remember it is man that commits violence in fellow men. And we salute those that are willing to die for fellow men. The triumphal arch of India Gate was raised in memory of the 90,000 soldiers of the Indian Army who died during the First World War and whose names are inscribed on the monument. This view is from the top of the arch, which rises to a height of 120 feet. At the top of the monument burns an eternal flame to honor the unknown soldier. As the Prime Minister arrives, he is received by the Raksha Rajya Mantri, Mr. Lalit Vijay Singh. He meets the three chiefs of staff, the Chief of Army Staff, General Rodericks, the Chief of the Naval Staff, Admiral L. Ramdas, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal S.K. Mehra, and the Defense Secretary, Mr. M. N. Vohra. A homage, a salute to those that have made the supreme sacrifice for the Republic of India. As the Prime Minister will lay the wreath, here the guard gives Salami Shastra and then Shok Shastra. The thousands in Rajpath and the nation pause in 2 minutes silence.
The guard presents Salami Shast, and the buglers sound the rouse. The guard commander orders Bazu Shastra. From those moments of solemnity, all eyes, as the Prime Minister departs from India Gate at this eastern end of Rajpath, turn towards Vijay Chowk and Rashtrapati Bhavan at the other end, from where the colour and the pageantry and the celebrations. The Prime Minister greets the three Chiefs of Staff and the Defence Secretary, and the Minister of State for Defence, Mr. Lalit Vijay Singh. The eyes go down Rajpath through its wide green lawns, now teeming with people, a clear, fresh black tarmac with its spotless white traffic lines for some 2 kilometers, its long line of caryopsis and string of national tricolours and gleaming white flagpoles. And as we await the pageantry and the parade, our thoughts go back to the founding fathers of our republic, the republic we today celebrate. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Our Constitution is an expression of the democratic urge. The Constitution embodies fundamental rights and directive principles of policy which assure many types of freedom. Our state is a secular state which gives equal opportunity to every group, every part of the country, every state, province and area. भारत की एकता का प्रतीक जन समूह, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के नर नारी 42वें गणतंत्र दिवस समारोह में उल्लास से सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय पर्व उत्साह से मना रहे हैं। जन समूह में उमंग है, उल्लास है। गंगा जमनी संस्कृति का प्रतीक हमें याद आता है लाहौर के निकट रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को अविभाजित भारत के नेताओं और जन साधारण का लिया हुआ शपथ संपूर्ण स्वराज्य का। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
उस समय राष्ट्रपति कहलाती थी। और उसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 के दिन संपूर्ण स्वराज्य के संकल्प का वही सपना साकार हुआ 26 जनवरी 1950 को। And the Prime Minister arrives at Rajpath. First greets the Chief Army Staff, General Rodriguez, then Admiral Ramdas, Chief Naval Staff, Air Chief Marshal Mehra, Chief of Air Staff, and then will move to one side to meet the other VIPs who are present. Meets Mr. Devilal, the Deputy Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, Mrs. Gandhi, Mr. VP Singh, and Mrs. Sita Singh. The other cabinet ministers. A day which is always remembered because this is the ritual that's been set by for 41 years, that the Prime Minister, after arriving at Rajpath, meets almost everybody who's here. And then today we have, apart from the chief guest who is the President of Maldives, Mr. Maumoon Abdul Gayoom, and his lady wife, Madam Nasrina M.A. Gayoom, they are the chief guests. We have Mr. G.P. Koirala, who is one of the stalwarts of the Nepalese independence movement, and also the Foreign Minister of Maldives, the Honorable Fatullah Jamil. The Prime Minister moving from one side, he is accompanied by Mr. Lalit Vijay Singh, the Minister of State for Defence. To give you some idea of what today's parade is all about, there are quite a number of new items that will be shown today. The Navy will be showing INS Shalki, which will be for the first time. The Air Force will be showing the Mirage 2000 for the first time on parade, not a model but an aeroplane itself. The route of the parade is as usual, which has been for all these years, that they go down Rajpath up to India Gate, and here are the Prime Minister meeting the handicapped children. They meets the handicapped children, and then he moves to meet the other VIPs, the foreign dignitaries, but he's now going to the front because we have the Vice President, Mr. Shankar Dayal Sharma and Mrs. Sharma arriving, Prime Minister Mr. Lalit Vijay Singh receiving them. उपराष्ट्रपति डॉक्टर चंद्र दयाल शर्मा शपथ ली, सलामी मंच पर पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया और अब The Vice President will meet the three service chiefs, the Army Chief, the Navy Chief, and then the Air Chief. राष्ट्रपति महोदय का परिचय कराया गया। And then he will go to his seat on the saluting desk. As I was telling you, the route is as usual along Rajpath, then left on Kasturba Gandhi Marg, on into Connaught Place, under the Shivaji Bridge, then Shraddhanand Marg, Khari Bawli, Chandni Chowk, and finally finishing at the Red Fort. The thousands who are here are enjoying this tremendous spectacle. It's a beautiful day here in Delhi. Lovely sunlight, it's mild weather, clear skies, it's absolutely beautiful. I'll give you a little more information about the bands which are opposite the saluting desk, drawn from the Brigade of Guards, the Artillery Center Nasik, Bengal Engineering Group, and 2x4 Gurkhas. They will play the national anthem on the arrival of the President and as well as on the departure. And during the time when there are no bands in attendance with the marching columns, they will play all the background music.
And then at the back, we have the saluting battery drawn from the 154 field battery of the 18 field regiment, who will fire the 21-gun salute. They are under the command of Major S.J. Raj. The gun position officer who actually gives the order is Major Captain Srinivasan. And now we see the arrival of Mrs. Venkataraman with Madam Nasrina Gayoom, the wife of the President of Maldives, arriving in state. श्रीमती वेंकटरमन सलामी मंच पर पहुंच रही हैं। The Prime Minister, the Minister of State for Defense, the Defense Secretary are, I can see them very clearly, there to receive the guests. Mrs. Venkataraman comes out of the car, is greeted by the Prime Minister. Madam Gayoom is greeted by the Prime Minister. Madam Gayoom in a marvelous national Maldivian dress in a sort of deep mauve. Mr. Lalit Vijay Singh visible. And now all eyes on Rajpath go towards the left for the arrival of the President. There we are. You could just about manage to see Rashtrapati Bhavan in the background. There is a slight mist in the air. So at a distance it's very difficult to see exactly very clearly. But there is the presidential cavalcade with accompanied by the bodyguards under the command of Colonel Aditya Singh, who is on the right of the presidential car, and to the left of the presidential car is the second in command, Major Yashwant Kumar Singh. The president's bodyguard, by tradition, is considered to be the senior-most regiment in the army, and there are certain rules and regulations that are followed where it comes to their recruitment. All men must be over 6 feet tall, and all the horses must be above 17 hands. They are all qualified paratroopers and efficient tankmen. 217 वर्षों की वीरता की कहानी राष्ट्रपति अंगरक्षक की, जो इस समय राष्ट्रपति वेंकटरामन के अनुरक्षी बने हुए हैं। और उनकी बाईं ओर मेजर यशवंत। आज की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में श्री मामून अब्दुल गयूम, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति और इस समय दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक उन्नत नस्ल के घोड़े, गर्व से भरे सवार, जोधपुरी नीला साफा, लाल सुनहरा लंबा कोट, और अब राष्ट्रपति वेंकटरामन और मालदीव के राष्ट्रपति जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री मामून अब्दुल गयूम की कार का मंच के पास आगमन। राष्ट्रपति अंगरक्षक पंक्तिबद्ध राजपथ के दूसरी छोर पर खड़े हो गए। चौकस सवार, हाथ में नेज़े। राष्ट्रपति महोदय सलामी मंच पर पहुंचे। उनके साथ आज की इस परेड को देखने के लिए आए मुख्य अतिथि मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम मामून अब्दुल गयूम। प्रधानमंत्री श्री चंद्र शेखर ने मुख्य अतिथि और राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति के दाहिने तरफ रक्षा राज्य मंत्री श्री ललित विजय सिंह का परिचय तीनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष जनरल रोड्रिक्स, एडमिरल रामदास और एयर चीफ मार्शल मेहरा और रक्षा सचिव श्री वोहरा से कराया गया।
सलामी मंच की ओर। सलामी मंच राजपथ से लगभग 15 फीट दूर थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ। राष्ट्रपति के आगे आगे उनके 2 एडीसी। And now that the President has arrived on the saluting dais, we shall have the national salute, which President's bodyguard. Now, after the national salute, the President's bodyguard will turn left and proceed along Rajpath to take their position for the end ceremonies. And now all eyes are towards the left, which means facing Rashtrapati Bhavan, for the arrival of the 4 helicopters to drop the rose petals. But we will also have today the Ashok Chakra. श्री रणधीर प्रसाद वर्मा मरणोपरांत। Srimati Varma going up to receive the Ashok Chakra. We'll have the citation reading in a few seconds. धनबाद के पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा के श्री रणधीर प्रसाद वर्मा 3 जनवरी 1991 को अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे कि तभी उन्हें सूचना मिली कि बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा को कुछ सशस्त्र डकैत लूट रहे हैं। श्री वर्मा तुरंत ही केवल अपने सुरक्षा गार्ड के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्हें भयभीत करने के लिए डाकुओं ने सीढ़ियों के ऊपर से गोली चलानी शुरू कर दी। श्री वर्मा ने उन्हें ललकारा और अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। इसी बीच दरवाजे पर खड़े एक डाकू ने श्री वर्मा पर पीछे से गोलियां चलाईं। यद्यपि श्री वर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे, फिर भी घूमकर गिरते गिरते उन्होंने उस डाकू पर 3 बार गोली चलाई, जिससे घटनास्थल पर ही वह ढेर हो गया। ये देखते ही सीढ़ियों के ऊपर खड़े अन्य डाकुओं में से एक ने श्री वर्मा पर अपने स्वचालित हथियार से गोलियां चलाईं, जो उनके सिर, छाती एवं पेट में लगी। श्री वर्मा नीचे गिर गए और वीरगति को प्राप्त हुए। जब हतोत्साहित डाकू लूट का माल वहीं छोड़कर भागने लगे, तब वहां पर एकत्रित भीड़ ने श्री वर्मा के बलिदान से प्रेरित होकर डाकुओं को दबोच लिया और 2 को मौत के घाट उतार दिया। श्री रणधीर प्रसाद वर्मा ने देश के पुलिस कर्मियों के लिए साहस, नेतृत्व
और निस्वार्थ कर्तव्य परायणता का महान उदाहरण प्रस्तुत किया। यद्यपि श्री वर्मा और उनका सुरक्षा गार्ड संख्या में डाकुओं से कम थे और उनके हथियार भी डाकुओं के हथियारों से कम शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने डाकुओं से मुकाबला करने का साहसिक निर्णय लिया और अपने जीवन का बलिदान देकर अति असाधारण वीरता का परिचय दिया। श्री रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी श्रीमती रीता वर्मा। Mrs. Verma going up to receive the posthumous award of Ashok Chakra from the President. And probably in overhead you're probably hearing the 4 helicopters of MI 17 helicopters or 12 helicopter unit dropping rose petals, carrying the national flag and the inter-service ensign, just going over the President as the Ashok Chakra ceremony finishes, and all eyes are now on the main parade where the parade commander is now approaching the President. Major General P.P. Singh is commanding the parade today. Commissioned in June 1959. He is a graduate of Special Forces Ranger School of the United States, as a graduate of the National Defense College, and is also at the moment the Colonel of the Brigade of Guards. He commands the parade up to India Gate, and thereafter the Brigadier M.N. Kotaya, the Deputy GOC, Delhi area, takes over. That's General P.P. Singh, GOC Delhi area, and that's ब्रिगेडियर कोटाया। ब्रिगेडियर कोटाया जो आज की परेड के उप कमान अफसर हैं, बहुत ही चटक सलूट राष्ट्रपति की। राजपथ और मानसिंह मार्ग पर, उसके आगे ब्रिगेडियर कोटाया इस परेड की कमान अफसर। And now we have the winners of the PVC and Ashok Chakra and the Victoria Cross going past the President. कर्नल होशियार सिंह सबसे दाहिने तरफ सलूट करते हुए, और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, मेजर राम राघोभा राणे, अशोक चक्र में लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, कैप्टन साइरस पीठावाला, सूबेदार ऑनरी कैप्टन सुंदर सिंह, नायक नर बहादुर थापा, लांस हवलदार शरीफ मुत्तू, श्री हनुमान सिंह, गोविंद सिंह, लखन सिंह, धनपत सिंह, और विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं में जो कि अशोक चक्र के पीछे वाली जीप में चल रहे हैं, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन भंडारी राम और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन अगन सिंह राय। And now, as the first and the last of the mounted cavalry in this world, the 61st Cavalry may go past the President under the command of Captain Sandeep Diwan. One officer, one JCU and 48 other ranks mounted on their horses in their blue dress, white breeches, blue and gold turbans, the cavalry burgee in their hands. This regiment was actually the last of the Second World War and the first and only one now, has had 10 battle honours and 3 theatre honours. It's quite remarkable for a mounted regiment. And they of course have also won Arjuna Awards and gold medals in equestrian events during the Asian Games. कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हुए 61 कैवलरी के अश्वारोही सैनिक सलामी मंच के सामने से निकल गए, और उसके बाद रिमाउंट और विटरनी कोर का दस्ता, रिमाउंट और विटरनी कोर के दस्ते की कमान कैप्टन वेंकट एन गौड़ा ने, और उसके पीछे विहंगम दृश्य इस समय टैंक्स का दिखाया जा रहा है। And now Vijayanta tanks, the Avadi manufactured medium battle tank which saw action in the 71 operations and performed very commendably. This squad is from the 89th Armored Regiment under the Commander Major Rakesh Sharma, whom you see in the leading tank. These tanks have got a 105mm
gun, and they are capable of operating both in day and night operations over any territory that you can name. They can go up slopes, into slush, into tremendous hardships to maintain their position in the front. In their camouflage colors, the Vijayanta tanks looking a tremendous sight on the Rajpath. As they go past, when they go past the president, they will swing their guns to the right and the gun barrels will dip. You'll just see the gun, there they go, turning right, and Major Ramesh Sharma will salute the president as the gun barrel dips. पहला टैंक मेजर रमेश शर्मा का, जो विजन टैंक के इस दस्ते की कमान कर रहे हैं, भारत में बने विजन चालक दल 89 आर्मर्ड रेजिमेंट का, और इनका मूल मंत्र वीरता या वीरगति। इस विजन टैंक की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दोबारा ईंधन लिए बिना 300 किलोमीटर तक एक साथ जा सकता है। विजन टैंक 1965 और 1971 की लड़ाई में खेमकरण, अशोक उत्तर और बासंतर के मैदान में शत्रु के छक्के छुड़ाने वाले विजय, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने वाले ये हमारे भारतीय विजय, जिन पर हमें गर्व है। And the guns that you see at the back belong to the T-72s, the main battle tank at the moment of the Indian Army, with a 125mm gun. And they salute the President under the command of Captain Ajay Singh Shekhar. And only the first tank dips turns around because the barrels are too long. कैप्टन अजय सिंह शेखावत की कमान में T-72 टैंक पराक्रम और शौर्य की गाथाओं से भरपूर है आर्मर्ड कोर का इतिहास। T-72 टैंक आधुनिकीकरण अभियान का महत्वपूर्ण भाग 11 वर्ष पहले इसी राजपथ पर पहली बार ये दिखाई दिए थे। बहुत ही गतिशील, रात में रणभूमि में सक्रिय चालक दल 86 आर्मर्ड रेजिमेंट। And behind them, the 130mm gun catapult under the command of Major Fasiluddin Ahmed. This indigenously manufactured self-propelled gun is mounted on a tank chassis, as you probably see, the Vijayanta tank chassis, as they go past the presidents. And these guns, this regiment, the 40 medium regiment self-propelled, saw actions in 48, 65 and 71 wars, and also in Asalutta and Khemgaran sector, which was considered to be the graveyard of the pattern tanks. And directly behind them now is the 155mm FH-77B howitzer. तोपखाने की आधुनिक शस्त्र प्रणाली, कमान कैप्टन पुरुषोत्तम तिवारी। 155 मिलीमीटर FH-77B तोपची दल 282 मीडियम रेजिमेंट पर। गणतंत्र दिवस परेड पर पिछले 4 वर्षों से लगातार ये वही बहुचर्चित तोप है। अपनी जगह चहुं ओर घूमकर 30 किलोमीटर तक गोला फेंकने की क्षमता, प्रसिद्ध रणनीति दागो और भागो, शूट एंड स्कूट, रंग खाकी, रेगिस्तानी माहौल से मेल खाता हुआ। 2 तोपें स्कैनिया गाड़ी खींच रही हैं और अन्य 2 तोपें APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट से खुद ब खुद कुछ दूर तक जाती है। And directly behind the Swedish guns that you just saw is the multi-barrel rocket launcher, the 155mm. It's the 214th Rocket Regiment of the Artillery under the command of Captain S.K. Sharma. This is an area saturation weapon, and each of these launchers which you are seeing has got 40 rockets, and all of them are launched within 20 seconds, up to a distance of 21 kilometers, and can make absolute hell in the enemy area because they really saturate the area. So this is the 122mm multi-barrel rocket launcher.
214 रॉकेट रेजिमेंट का ये है और इसमें कोई शक नहीं कि इसके 40 बैरल जब एक साथ 20 सेकंड में 40 रॉकेट छोड़ते हैं तो ज़मीन हिल जाती है भूडोल की तरह। और L-70 विमान भेदी तोप कमांड मेजर संजीव शेरी इस रेजिमेंट का ये मुख्य हथियार है और इसके साथ ही फ्लाई कैचर रडार भी है। यथा नाम तथा गुण, हवा में उड़ रही छोटी से छोटी चीज़ को भी ये निकलने नहीं देती है। 330 AD रेजिमेंट के लोग इसके चालक दल में, जिनका युद्ध घोष 323 बीच मैदान दुश्मन छोड़े जहां। And you will find just after you just seeing the L-70 Bofors, after this you will find there is the radar pack of this is the flycatcher radar that you are seeing in front of you. It's actually inside that box, but you can probably make out the antenna on top. Behind the flycatcher radar and the L-70 40mm anti-aircraft gun, you see the OSA AK air defense missile weapons from the 436 ADM regiment under the command of Major Gurjeet Singh Brar. The surface-to-air missile called OSA AK can fire at any modern aircraft. That's the radar that you are watching at the moment, from treetop level to any height, and it is basically used in the front area to protect our armor columns. Armor columns were subject to attack by enemy radar, enemy missiles. This is the missile, anti-missile that is used to destroy the aircraft that are coming to attack our own armor regiment, armor column. And behind them, the Stellar 10M. हाँ, और ओशा AK के बारे में एक बात और ये कि इसको सैम 8 नाम से भी जाना जाता है और ये स्ट्रेला 10M हवाई सुरक्षा की हल्की मिसाइलें, कमान कैप्टन आशीष शर्मा। सबसे आगे अपने जीप में स्ट्रेला मिसाइल प्रणाली को भारतीय थल सेना में हाल ही में शामिल किया गया। कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों से हमारे बख्तरबंद गाड़ियों को, अन्य दस्तों को हवाई सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ही कारगर। The Stella M is again another weapon that is used at the front line to protect our own armor columns, and it is actually against low-flying aircraft at short ranges. The other one that you saw earlier was for at longer range. This is a short-range weapon, and then behind them, coming into view, is the Cymbeline radar, the FAX 100. It's under the command of Captain Sardendu. This radar is used to locate enemy guns and mortar, and you probably heard being told that a gun is able to scoot and scoot, and this is exactly what this weapon does, is to find out where the gun is and to shoot it before it scoots, and it's used also for battlefield surveillance. ये चालक दल 122 सर्वेलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन बैटरी के हैं और अब टैंक ट्रॉल कमान कैप्टन फिरोज हमीद उस्मानी, अल्टिस असॉल्ट आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट के ये ट्रॉल उपकरण T-55 टैंकों में लगा है। इसके दांते देखिए कितने ज़बरदस्त। टैंक के सामने के रोलर बारूदी सुरंग के संपर्क में आकर उसे उड़ा देते हैं और सैनिक दस्तों का रास्ता साफ करके उन्हें पूरी गति के साथ आगे बढ़ने देते हैं। अपने टैंकों को आगे बढ़ाने के लिए बारूदी सुरंगें रहित रास्ता मिलता है इन टैंक ट्रॉल्स के कारण। And these tank trolls, as you've just been told, clears the way of mines and minefields to protect our own armor, which follows them, mounted on a P-55 chassis. And behind them now, under the command of Captain Sanjay Sharma of 1 Armored Engineer Regiment, is the AM-50 bridge vehicles. These vehicles can put a bridge across any slush, stream, river up to a length of 50 meters, so that the tanks and other motorized columns can pass
men can pass a lot, but motorized columns have their problem, and this is the one that helps in front line in laying a bridge across areas where they have to be laid. एक आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट मद्रास सैपर्स का ये AM 50 पुल वाहन 50 मीटर तक की लंबाई का पुल बहुत ही थोड़े समय बना देता है, और ये PMS पुल कमान कैप्टन सिल्वर कुमार 657 इंजीनियर ब्रिज यूनिट का मजबूत तैयार किया हुआ तैरता पुल ये बनाते हैं। इस उपकरण के एक सेट से क्लास 60 किस्म का 200 मीटर तक लंबा पुल कुछ ही समय में बना देते हैं। These bridges were used in the 1962, 65 and 71 operations. And behind them is the combat engineering tractor under the command of Captain D.R. Chandra, belonging to the 64th Assault Engineering Regiment. The regiment belongs to the Bengal Engineering Group. It's a multi-purpose vehicle which provides support to Army's mechanized formation. It constructs and improves cross-country routes and helps in bridge laying and across water-filled obstacles. It is also employed in ABCD, which is either atomic or nuclear, biological and chemical warfare. और कोर ऑफ सिग्नल्स का ये सैटेलाइट टर्मिनल जो थल, जल और वायु मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाता है। कैप्टन सरबजीत सिंह पुनिया इसकी कमान कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में ही विकसित किया गया उपग्रह के माध्यम से सेना के लिए बहु चैनल लंबी दूरी की संचार व्यवस्था पैदा करता है। And behind them, under the command of Captain G.S. Shalvan, you see the electronic warfare station. In modern warfare, this is the battle winner. If you have EW on your side, electronic warfare on side, you can jam the enemy radar and help your own side win. Helps in functioning of enemy, destruction of enemies' communication, radar, missiles, and weapon system, and helps yourself, and therefore becomes what is known as a battle multiplier. इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन के कमांड मेजर प्राण छिपर कर रहे हैं। युद्ध में इन्फेंट्री और आर्मर के तालमेल में बहुत ही सहायक टैंक की गति के साथ साथ इन्हीं गाड़ियों में बैठकर पैदल सेना के सैनिक युद्ध भूमि तक पहुंचते हैं और तत्पर हो जाते हैं। इसका कवच हल्के हथियारों से इन सैनिकों को सुरक्षा देता है और इसकी मिसाइल से शत्रु के टैंक नष्ट किए जा सकते हैं। Quite a remarkable weapon that, because it's got guns, it's got anti-tank rockets, and also it prevents our own troops from getting hurt from small arms. And directly behind them are the infantry combat vehicle under the command of Major Pran Chibber. And now the anti-tank guided missile. 17 battalion guards. The anti-tank guided weapon has a certainty, absolute certainty, they can kill 100% of whatever they reach. They are highly mobile, as you can see. They are situated in Yongas, and they are today under the command of Captain A.S. Brar. मिलान प्रक्षेपास्त्र विश्व की श्रेष्ठ टैंक भेदी प्रणालियों में से एक है। 2 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी मुख्य युद्धक टैंक को यानी मेन बैटल टैंक को निश्चित रूप से ये ध्वस्त करती है। And behind the anti-tank guided missile, we have the first of the marching columns, which is the Madras Engineering Group. 210 वर्ष पुराने मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक जसवाल की कमान, 7 जेसीओ और 144 जवान। राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष ये ध्वज प्रदान किया। बहुत ही चटक चाल MEG का ये दस्ता पिछले 4 बार से गणतंत्र दिवस परेड में सर्वोत्तम घोषित किया जा रहा है। इसे 2 महावीर चक्र, 11 वीर चक्र और 8 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। And the band behind is the Armored Corps and BEG playing Deshon Ka Sartar Bharat under the command of Subedar Major Ravi.
directly behind is the Punjab Regiment, the oldest regiment of the Indian Army. Under the command of Major S.J. Sodhi, they have to their credit 53 battle honours, 53 pre-independence and 10 post-independence. It's a remarkable history of bravery. 150 वर्षों से अधिक गौरव गाथा का इतिहास, वीरता से भरपूर, और ये मद्रास रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता बहुत ही शान से चले जा रहे हैं। कमान मेजर वी मुकेश कुमार, जिन्होंने ब्रिज को चूम करके और दाहिने तरफ झुका दिया। मूल मंत्र स्वधर्मे निधनम श्रेया। इनका युद्ध घोष है आडि कुल्लू, प्रहार और हनन, शत्रु पर प्रहार और हनन। और अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ट्रेनिंग सेंटर और मराठा लाइट इन्फेंट्री का बैंड, कमान सूबेदार कृष्ण भट्टी, धुन शांत सिंह। And as the band goes past, we see the Sikh regiment under command of Captain Om Prakash Sumra. The Sikh regiment was formed from the remnants of Maharaja Ranjit Singh's army in 1846. Up till now, they have 69 battle honours, won 2 PVCs, 2 Ashok Chakras, 14 MVCs, 58 Veer Chakras. And during the British period, they had 10 VCs and 34 military crosses. और आसाम रेजिमेंट, कमान कैप्टन शेरॉन मार्टिन, सियाचिन ग्लेशियर और श्रीलंका में इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। आसाम रेजिमेंट अभी तक 1 महावीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 2 शौर्य चक्र और 3 वीर चक्र से सम्मानित है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र कदम से कदम सफेद स्पैड्स में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस समय। पूर्वोत्तर क्षेत्र के ये जवान वहाँ पर शांति स्थापित करने में बहुत ही सहायक है। And behind the Assam Regiment band is the band of Dogra Regiment and EME playing Sher Jawan under Subedar Major Puran Singh, and behind them that's playing Sher Jawan. Behind the band is the Bihar Regiment under the command of Major Kashmir Singh. This was formed in September 1941 and fought in the Burmese theatre in Malaya during the Second World War, and after independence in 65 and 71 war, they have to their credit 1 Mahavir Chakra and 7 Veer Chakras. और इसके बाद महार रेजिमेंट, कमान मेजर अश्विनी शर्मा। एक परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 5 शौर्य चक्र और 29 वीर चक्र से सम्मानित। और महार रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते के ठीक पीछे महार रेजिमेंट के ही और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का बैंड, कमान सूबेदार ओम बहादुर, धुन अमर सेनानी। Behind the band, the most famous regiment of all, the 9 Gurkha Rifles under the command of Major Dalbir Singh Chahal, saluting the President. They have 3 Victoria Crosses, 5 Mahavir Chakras, 17 Veer Chakras. In their distinguished hats and Gurkha hats and kukris, they are the pride of any army wherever they are. They have in their 175 years history 328 battle honours. It's a record in the annals of military history. 320 वर्षों का पुराना इतिहास सेना सेवा को, कमान कैप्टन प्रीत मोहिंदर सिंह। इनका ध्येय वाक्य सेवा अस्माकं धर्म। भारतीय सेना के लिए रसद, ईंधन और परिवहन सेवाएं एएससी प्रदान करती है। युद्ध और शांति में समान रूप से निपुण, सियाचिन से श्रीलंका तक। And behind the ASC is the ASC band, AMC band, the Army Medical Corps band and Sikh Life Infantry band under the bandmaster Subedar Major Gurmel Singh playing Sam Bahadur in the memory of, in honor of Field Marshal Sam Manekshaw.
And behind the band, marching very smartly, are the contingent of the Army Ordnance Corps under Major C.J.S. Dillon, raised in 1775. AOC received its colors in 1970. Their motto is Shastra Se Shakti. They help the army in maintaining its ordnance level upstairs, and they have 2 wheat chakras and 2 short chakras. और सुई से लेकर के टैंक तक लगभग 5 लाख चीजें ये जुटाते हैं। और कोर ऑफ ईएमई मेजर यशवंत सिंह की कमान में थे वाक्य कर्म ही धर्म। 1965 और 71 की लड़ाई में अपना दायित्व बहुत अच्छा निभाया और इन्हें वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, पद्मश्री से और अब बैंक जाट रेजिमेंटल केंद्र और एओसी का मेजर सूबेदार मेजर एल.सी. नाथ कमान में धुन सारे जहां से अच्छा। And directly behind the band is the Territorial Army, Jawans of 122 Battalion, under the command of Lieutenant P. Sampath. This battalion has taken part in various operations up to now in both peace and in war. And behind them, the band of the Navy under the command of Petty Officer Musician H.S. Karki, playing Jai Bharati, which was composed by Mr. M. Dias. This is now the official Navy tune. और इसी जय भारती की धुन पर मार्च करते हुए नौसेना के लोग पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी कमानों का मिला जुला मार्चिंग दस्ता। कमान लेफ्टिनेंट कमांडर रघुवीर पुरंदरे, 147 नौसैनिकों का दस्ता, बहुत ही चुस्त और जटक। इनके सफ़ेद स्पेट, सफ़ेद स्लिंग और सफ़ेद हैट इनकी नीली वर्दी में 4 चांद लगा रहे हैं। And behind the smart Navy column that's going past you now is the Navy float, the first of the Navy float, showing the first Indian-made missile boat, INS Vibhuti. You can see the model, the aerials for antennas for its radar, for guidance, for surveillance, the missiles quite clearly visible. This is being shown for the first time. This will join the Navy in 1991, this year sometime, and it's only 550 tons, but is capable of 35 knots and a range of about 2,000 nautical miles. There it is, a model of INS Vibhuti. भारतीय नौसेना पोत विभूति का लघु रूप देखा, मॉडल देखा, और अब दूसरा लघु रूप भारतीय नौसेना पोत शल्की, भारत में ही बनी पहली शक्तिशाली पनडुब्बी। भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इसी वर्ष हमारे नौसैनिक बेड़े में शामिल हो जाएगी, बम्बई की मझगांव गोदी में बनी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि शल्की हमारी नौसेना को एक प्रहार शक्ति प्रदान करेगी। But it's quite remarkable. We're one of the few nations in the world that's building its own submarines, and there is the Model 1. And directly behind Shalki is INS Kothar, a corvette, entirely of Indian design and construction, again made in Mazagon docks, fitted with the most complex array of weapons and sensors. It can counter multi-dimensional threats at sea. She can carry helicopters of various varieties, including the advanced helicopter and now the Air Force. सबसे पहले बैंक, भारतीय आकाश के रक्षक, भारतीय वायुसेना के अफसर व जवान। Sound barrier under the command of Warrant Officer R.M. Wilson, and behind them मार्चिंग दस्ता जिसकी कमान कर रहे हैं स्क्वाड लीडर भूपिंदर सिंह, और साउंड बैरियर की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए 144 वायुसैनिक 12 कतारों में मार्च कर रहे हैं। And the Air Force marching column directly behind. You can see for the first time on parade the French acquisition from France, the Mirage 2000 multi-role medium-sized single-seat aircraft, the Delta Wing, with its pilot, Flight Lieutenant M.S. Venkatesh, saluting the President. This can fire 2 30mm internal guns and also a tremendous amount of ordnance load. You can see the missiles under the wings.
It's capable of Mach 2.2. और श्याम ये सचमुच का विमान है, ये मॉडल नहीं। पहले तो नौसेना की चीज़ों के मॉडल थे, लेकिन ये सच्चा मिराज 2000 युद्धक विमान है, डेल्टा विंग वाला, बहुउद्देशीय। और पायलट इसके साथ ही आपने देखा फ्लाइट लेफ्टिनेंट Behind them is the MiG 27M, which is the, you can see the pilot, which is P. Venkataraman. It's a versatile aircraft which has a swing wing, which means that the wings can go from straight to sweeping back. It is an attack aircraft and therefore not very fast. It goes only up to about 1300 kilometers an hour, and it's extremely efficient at low levels. And there you can see the multi-rocket pod. मिग 27M को बहादुर नाम से भी जाना जाता है, और लक्ष्य का निशाना लेने में इसमें स्वचालित व्यवस्था है। And behind the MiG-27, we will see the entire array of weapons that the Air Force uses in modern warfare. There they are. This is the view from India Gate that you're seeing the parade. It's absolutely gorgeous. Unfortunately, because the slight mist, you're not seeing it very clearly, but right there on the right of your screen is this entire array of 30mm gun, 30mm aircraft gun, 80mm rocket pod, 57mm rocket pod, RP bombs, which is the runway denial bombs, the anti-tank guided missile, the Magic to air-to-air missile, anti-tank guided missile, the Super 53D missile, and the laser guided bomb, TV guided bombs, the anti-aircraft missile, cluster bombs, and 1000 kg laser guided bombs. भारतीय वायुसेना जिन शस्त्रों का प्रयोग करती है, और विशेषकर कंधे से मार करने वाले, हवा से, ज़मीन से हवा में मार करती है, बहुत ही कारगर, बहुत ही सक्रिय। And behind them is the P-18 and P-19 air defense radar. These radars, of course, become absolutely imperative at the front line because they not only warn you of incoming enemy aircraft up to 80,000 feet, from treetop to 80,000 feet, they also help our own weapon systems to be trained on the enemy, which as soon as the radar go off your screen, you see the picture of missiles. पहले रडार जो कि पेड़ की ऊंचाई से लेकर के 80,000 फीट की ऊंचाई तक के विमानों को पकड़ लेता है, और पिचोरा प्रक्षेपास्त्र धरती से आकाश में मार करने वाले हैं। ये हमारी वायु सुरक्षा, हवाई वायु सुरक्षा का आधार पेड़ जितनी कम ऊंचाई से लेकर बहुत ऊंचाई तक उड़ते हुए दुश्मन के विमानों का पता लगाकर उन्हें मार गिराती है। कठिन और विषम परिस्थिति में भी ये पिचोरा मिसाइल्स बहुत ही कारगर है। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक Now behind the Pichora missiles is the adventure activity of the Air Force. We have power, hang gliding, parasail, raft, sailboat and water scooter. The Air Force showing you how much they help adventure sports. साहसिक खेलों से बढ़ता है साहस। And as the adventure activity goes past of the Air Force, we have the ex-servicemen, of which Brigadier Sawant and I are members of. What do you say? धन्यवाद श्याम। कमांडर वर्मा ने ठीक ही कहा, लेकिन अभी तो ये साहसिक गतिविधियां हैं, और साहसिक खेलों से ही बढ़ता है साहस, जो मिग, मिराज और जगवार विमान के पायलट्स में पैदा करता है। हवाई गुत्थम गुत्था में वही जूझ सकता है जो साहसिक हो। वायुसेना की झांकी आगे बढ़ती हुई, और अब वायुसेना के दस्तों के बाद Marvelous sight. विहंगम दृश्य, अपार सेवानिवृत्त किंतु अभी भी देश सेवा में लीन, ढलती उम्र के हैं किंतु मनोबल में ढलान का कोई चिन्ह नहीं। आज भी मन में वही उमंग है जो पहले थी। राष्ट्रपति मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहे हैं। सीने पर चमकते हुए इनके पदक इनकी वीरता की कहानी कह रहे हैं। जीवन का सर्वोत्तम भाग देश की रक्षा में लगाए उन्होंने नेतृत्व ऑनररी कैप्टन उमेद सिंह। And behind them, the mass bands of Punjab Regimental Centre, the Madras Regiment Sector,
16 Grenadiers, 4 Maratha Light Infantry, 6 Assam, Rajpath Regimental Centre and Cavalry Centre, playing Herna Herna under the command of Subedar Veer Sharma. अर्धसैनिक संगठन सीमा सुरक्षा बल, असिस्टेंट कमांडेंट राजेंद्र पाल सिंह जसवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रहरी, लंबे कद के लोग, चटक चाल, एक महावीर चक्र, 11 वीर चक्र, 5 शौर्य चक्र से And behind them the band, the camel mounted band or the camel corps of the BSF. They're coming into view under the command of Assistant Commandant Malam Singh Rathore. These trained ships of the desert have helped enormously in the anti-smuggling operations on the border. They are the only camel-mounted troops in the world as far as we are aware. भारतीय सेना में पहले गंगा जैसलमेर रिसाला था और उसके बाद ये अब सीमा सुरक्षा बल के ऊंट का दस्ता, मंथर गति। और यही नहीं, इन ऊँटों के साथ सीमा सुरक्षा बल का ऊँट सवार दस्ता के साथ ऊँटों पर सवार बैंड, जो संसार में अपने आप में अनुपम, इतने अधिक बैंड वाद्य, धुन, शेर जवां और नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर दीनबंधु। धुन बहुत ही सुरीली, रूप मनमोहन। And as the camel mounted band goes past, playing Sher Jawan, coming into view are the Sand Rifles under the command of Captain P. Rajpath saluting the President. They are mostly used in the northeast region and are called the Friends of the Hilly People. 3 of its battalions were deployed in the India peacekeeping force in Sri Lanka. The regiment has won 3 Ashok Chakras, 26 Kirti Chakras and 5 Veer Chakras. And behind them, the Central Reserve. केंद्रीय रिजर्व पुलिस का महिला दस्ता, 144 महिलाएं ओहदेदार शामिल हैं और नीली बेरी में कितनी ही सुंदर लग रही हैं। इस टुकड़ी का नेतृत्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीमती अपराजिता रामाध्यानी कर रही हैं। शांति प्रयास में तत्पर, हमेशा और हरदम सीआरपीएफ की वीरांगनाएं। And the band that you see is from the CRPF itself, playing Kendra Suraksha Krashi Bal under the command of Inspector P.S. Thapa. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी, कमान डिप्टी सुपरिटेंडेंट रविदीप सिंह शाही। CRPF was raised in 1939 and also took part in the peacekeeping operations in Sri Lanka last year and has presently a strength of 108 battalions. देश में अशांति हो या सीमाओं पर खतरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में भी महत्वपूर्ण भूमिका। And we have the Indo-Tibetan Border Force under the command of Deputy Superintendent Police J.S. Rawat. They are also called the Sentinels of Snow Mountains. They operate at 16,000 feet, minus 40 degrees centigrade. It's quite remarkable what they have to undergo, the Indo-Tibetan Border Force. And the band, also from the Indo-Tibetan Border Police, under the command of Inspector Lal Bahadur Prada, playing Sare Jahan Se Acha. बैंड के पीछे तटरक्षक दल, कमान श्री M.A. थाला का 98 नाविक इसमें शामिल हैं। तटरक्षक देश की 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक समुद्री क्षेत्र का सजग प्रहरी है। तस्करों को पकड़ते हैं और जो हमारे आर्थिक हित समुद्र में है उनकी रक्षा करते हैं। And behind them, the Coast Guard float, you see showing various activities. Their Dornier aircraft, their helicopters, their ships, they're catching offshore patrol vessels, they catch all kinds of smugglers and also protect our offshore
platforms. We must not forget that we have over 2 million square kilometers of exclusive zone to India. There they are, the Coast Guards.